Assalamu alaikum students. First year. Today we will read about the poem number 8, Ozymandias, written by Percy by Shelley. First of all, we will discuss about the poet. Then we will read the poem with translation in Urdu translation. Percy by Shelley, 1792 to 1822, was an English romantic poet. He wrote some of his finest lyrics, including the Ode to the West Wind, To a Skylark, and The Cloud in the last year of his life. He died in a storm at sea after visiting Lord Byron, another great poet. Shelley's work show his remarkable lyrical gift, his originality, and his hatred for oppression. He was a great revolutionary poet of his time. The theme of the poem is it is a very ironic poem which describes the pride of a man and the wretched reality of life. Man becomes proud by success. He thinks that he has toppled the world. He forgets that life is merciless. Time brings all luxuries of life to an end, and death is a great leveler. Shelley considers all feelings of superiority in man as only an illusion and self deception. The poet met a traveler from an ancient country. He told the poet that he saw two huge, bodiless legs made of stone. Those legs were standing in a desert. Near these legs there was lying the broken body of a man, half sunk in the sand. His features gave the impression that he was very proud and contemptuous of others. The artist has beautifully recreated these impressions on the face of stone. One could see that he was proud and heartless. At the bottom of the statue were inscribed these words: My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my work, ye mighty, and despair. In the desert there remains nothing except his broken statue. Students, now we will read its stanza with Urdu translation and explanation. I met a traveler from an antique land. मैं कदीम सरजमीन के एक मुसाफिर से मिला. Who said, जिसने कहा, two vast and trunkless legs of stone. एक जो है खुला, दो कुशादा खुली हुई जो है बगैर धड़ वाली टांगें. Stand in the desert, सहरा में खड़ी थी. Near them, उनके करीब. On the sand, रेत के ऊपर. Half sunk, आधा ज़मीन में धंसा हुआ. A shattered visage lies, एक जो है मसख शुदा मुजस्मा पड़ा था. Whose frown, जिसकी जो त्योरी थी वो चढ़ी हुई थी. मैं कदीम सरजमीन के एक मुसाफिर से मिला जिसने बताया कि पत्थर की दो कुशादा खुली हुई बगैर धड़ वाली टांगें सहरा में खड़ी हैं. इनके करीब ही रेत में आधा धंसा हुआ मसख शुदा चेहरा पड़ा है जिसकी जो है त्योरी चढ़ी हुई है. Now its explanation. The poet met a traveler. He came from an ancient land. He told the poet that he had seen a statue. It was standing in the desert. Its two huge legs were without a trunk. The face of the statue was lying in the sand. It lay half buried there. The features of the face were distorted. And
wrinkled lip and sneer of cold command, एंड रिंकल्ड लिप और जो शिकनज़दा होंठ थे, एंड स्नीर ऑफ कोल्ड और जो है हकारत से भरा हुआ कमांड हुक्म देता हुआ जो तहमकाना अंदाज था, और शिकनज़दा होंठ और हकारत भरा बेरहम तहमकाना अंदाज। टेल दैट इज़ अ स्कल्प्टर बताता था कि ये जो मुजस्मा साज है। वेल दोज पेशेंट्स रीड इन जज्बात को बाखूबी पढ़ा था। ये सब बताते हैं कि इसके मुजस्मा साज ने बादशाह के इन जज्बात को बाखूबी पढ़ा था। विच येट सर्वाइव स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, जो अभी भी शब्द थे स्टैम्प्ड शब्द थे ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, इस बेजान चीज़ों पर या इस बेजान मुजस्मे पर, इन बेजान चीज़ों पर सब ये जज्बात व एहसासात अभी भी बाकी रखे हुए हैं। द हैंड दैट मोक दैम एंड द हार्ट दैट फेड, मुजस्मा साज के हाथ की महारत को और बादशाह के दिली जज्बात व एहसासात को जो है जिसने बयान किया था। एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टैंजा। The face of the statue had a frown on it, its lips were wrinkled, there was a look of anger on it. The face showed merciless authority. All the feelings of a cruel king were clearly depicted there. It showed that a sculptor did not understand well at the unkind feelings of a powerful king. Therefore, he had carved them so plainly on the face. The idea is that the king's feelings were still visible on the face. And on the pedestal these words appear. मुजस्मा के पाँव के पास जो है ये अल्फाज कुनंदा हैं। माई नेम इज़ ओजीमेंडियास किंग ऑफ किंग्स, मेरा नाम ओजीमेंडियास है, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। लुक ऑन माई वर्क्स ये माइटी एंड डिस्पेयर, मेरे कारनामों को देखो ए जाहो जलाल वाले सपूतों, और फिर मायूस हो जाओ, क्योंकि ऐसे कारनामे सर अंजाम देना तुम्हारे बस का जो है रोग नहीं है। Explanation of this stanza. The words carved on the foot of the statue showed that Ozymandias was a great powerful king. They showed that there was no equal to him. The king claimed to be the king of kings. He had challenged all the great warriors not to try to be his equals, otherwise they would be disappointed. Nothing beside remains around the decay. अब उसका कोई कारनामा इसके पास बाकी नहीं इस शिकस्ता मुजस्मे के इर्द गिर्द। ऑफ दैट क्लोजल रैक बाउंडलेस एंड बेयर, इस टूटे फूटे कोहे कामत मुजस्मे की बाकियात के गिर्द एक वसीओ अरीज लकोदक द लोन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे, सुनसान और चटियल रेत का सहरा दूर तक फैला हुआ है। नाउ द स्टैचू ऑफ द किंग इज स्टैंडिंग अलोन इन द डेजर्ट, नथिंग कैन बी सीन नियर इट, एवरीथिंग एल्स हैज गॉन, द बिग ब्रोकन स्टैचू इज फर्दर डिकेइंग, only a vast barren desert surrounds the remains of the statue. Now the difficult words and its meaning. एंटीक कदीम पुराना, ट्रंकलस बगैर धड़ के, विजिज चेहरा, फ्रॉन शिकन, रिंकल्ड शिकनज़दा, स्कल्प्टर मुजस्मा साज, मोक नकल बनाना, पेडेस्टल पायादान पाया, क्लोसल कोहे कामत छोटा होना, रैक टूटी फूटी चीज़, मुजस्मा। Students, you have to prepare the questions of this poem and the critical appreciations and the explanation of
this poem? These are the questions. Give a summary of the poem. What kind of feelings does the poem create in the readers? What did the traveler see in the desert? You have to prepare these questions also.